fundus and the body together are 5 centimeter and cervix is 2.5 centimeter. That means the whole, it is around 7.5 centimeter. Okay, now one thing you have to know, और ये वाइवा में भी पूछा जाता है, what is the ratio between the fundus body and the cervix? Okay, in case of adult, the ratio is 2:1, जो कि तुम लोग को 5 and 2.5 से नजर आ ही रहा है. Its ratio is 2:1. जब children पे का बात करें, then the ratio reverses. It is 1:2. Okay, the ratio reverses in case of children. Now measurements में बोले तो the weight also is included in that. वो भी एक parameter है. So when we talk about the weight of the uterus, it is around 30 to 40 grams. Okay, that is the weight of the uterus. So this is all about the measurement. Now coming to the next part, and a very important part, that is axis of uterus. Very, very important. ये वाइवा में पूछा ही जाएगा. Okay, when we talk about the axis of uterus, so the axis of uterus is of two types. The first one we call version. Now what do you mean by the version? The version is the angle formed by the axis passing through the cervix and the axis passing through the what do you call vagina. First वाला picture लगाइएगा तो. अच्छा कहाँ पे? Okay. Okay, देखो, from this picture you can see, is the picture visible? Hello? Yes ma'am. Yes ma'am. Picture visible है ना? Okay, so इस picture में देखो, here you can see a line. Okay, that is the axis of uterus. Okay, और 3 लोग add on हो रहे हैं, ठीक है? 49. तो this one is the axis of uterus. हाँ, कलर चेंज कर दीजिए, नजर नहीं आ रहा है. ओके, इसको थोड़ा सा इरेज कर. ओके, नाउ देखो, दिस वन जो लाइन दिख रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ यूट्रस. ये जो यहाँ पे किंकिंग दिख रहा है, दिस इज द इस्थेमस पार्ट ऑफ द यूट्रस. ओके, सो ये दिस होल इज द बल्क ऑफ द यूट्रस. फंडस और बॉडी मिला के दिस इज द बल्क ऑफ यूट्रस. यहाँ पर जो किंकिंग नजर आ रहा है, दिस पॉइंट, दिस एंगल, ओके, दैट इज द इस्थेमस. आउटसाइड से बोले तो दैट इज द इस्थेमस. इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरनल ऑस. और ये जो लोअर पार्ट है, दिस पार्ट, ये एंगल कहाँ साथ में जा रहा है, हाँ, दिस पार्ट, ओके, यहाँ पर यू विल बी हैविंग द एक्सटर्नल ऑस. ओके, तो देखो, एक एक्सिस ऑफ यूट्रस बना, एक एक्सिस ऑफ, ये वाला बना एक्सिस ऑफ सर्विक्स, और एक और एक्सिस बन रहा है लाइक दिस. दिस इज द एक्सिस ऑफ वजाइना. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्जन, वर्जन होता है द एंगल फॉर्म बिटवीन द एक्सिस ऑफ द सर्विक्स एंड द एक्सिस ऑफ द वजाइना. ओके, ये हुआ वर्जन. तो वर्जन is basically nothing but it is, मान लो इस लेवल पे एक एक्सिस हम लोग फॉर्म क्रॉस कराएं, a transverse axis at the level of the external os. ओके, तो उस ट्रांसवर्स एक्सिस पे भी जो मूवमेंट होगा, दैट विल बी फॉर्म बाय दिस एंगल. ये जो एंगल बताया अभी, एंगल ऑफ वर्जन. ओके, सो एंगल ऑफ वर्जन इज नथिंग बट द एंगल फॉर्म बाय द एक्सिस पासिंग थ्रू द सर्विक्स एंड द एक्सिस पासिंग थ्रू द वजाइना along a transverse axis, that is known as the angle of version. So normally it has to be, the uterus is antiverted in position. Okay, it is very, very important. It is antiverted in position. That means anti matlab आगे की तरफ bend. So it is bending forward and this angle is around 90 degree. Okay, so this is antiversion. यहाँ पे देखो diagram ये लिखा हुआ है, antiversion and the angle is around 90 degree. अब हम लोग बात करते हैं next angle, that is angle of flexion. अच्छा, the angle of flexion. The angle of flexion जो होता है, that in this diagram you can see, this is the axis.
ओ राइट, हाँ ये वाला जो एक्सिस ऑफ यूट्रस हुआ, इट मेक्स एन एंगल विद द एक्सिस ऑफ द सर्विक्स, दिस एंगल, अरे पूरा का पूरा लाइन ही मूव करा, ओके दिस एंगल. Okay, so the axis of the uterine body and the axis of the cervix, that also makes an angle that is known as angle of flexion, and that corresponds to 120 degree. Okay, इसमें axis जो होता है, transverse line is an imaginary line is passed through the internal os. Okay, if an imaginary transverse line is passed through the internal os, the angle formed between the axis of the uterus and the axis of the cervix is known as angle of flexion. Now, in normal anatomical position, it is anteverted and anti-flexed. So anteverted to bata diya, anti-flexed is it is bending forwards. देखो how in this picture it is bending forwards. Uterus urinary bladder के ऊपर lie कर रहा है. ये क्या आया? एक और. Okay. Okay, तो antiversion हो गया 125 degree. तो antiversion and anti-flexion is very very important. Okay. So when you keep the uterus in anatomical position, it has to be anteverted and anti-flexed. अब plain page ले आइए. नेक्स्ट वर्जन हो गया, 2 वर्जन के बारे में बात किए, नहीं वर्जन सॉरी 2 नहीं, इट इज कहाँ गया, क्लियर किधर उड़ गया, क्लियर वाला, हाँ तो वर्जन एंड इसके बारे में बात कर लिया हम लोग, एक्सेसेस. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ यूट्रस. Now, as I told you, उसका 3 मेन पार्ट होता है, फंडस, बॉडी एंड cervix. Now each of them will be dealing separately. Talking about the fundus part, next picture यहाँ से था ना, इसके बाद वाला कैंसर. ओके नहीं ये वाला नहीं, इसके बाद वाला. ओके नाउ टॉकिंग अबाउट, देखो ये वाला पिक्चर विजिबल है, कोरोनल सेक्शन ऑफ यूट्रस एंड वजाइना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटिंग पार्ट्स, तो यूट्रस का क्या क्या पार्ट है. एज आई टोल्ड यू द यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड पार्ट्स. ओके, फंडस, बॉडी एंड cervix. फंडस बोले तो यू कैन सी दैट दिस इज द बॉडी, क्या हुआ है मूव कर रहा है, this part is the fundus. Okay, this is the position where the fallopian tube is entering into the uterine body. Okay, so the point at which the fallopian tube enters, uske upar ka jo bulge hai, that is known as the fundus. That is the first part. Second part hota hai body which includes is level se leke is level tak. Okay, that is the body. Upar hua fundus, next to a body, and नीचे का part from internal os to external os, ये हो गया third part, that is the cervix. So these are the 3 parts अगर pictorially देखो तो. Now talking about the first one, fundus. Fundus के बारे में बात करें तो there are 3 characteristic things. The fundus is the part which is above the fallopian tube. Okay, and it does not have a hollow cavity inside. देखो इस picture में भी you can see there is no hollow cavity. उस level पे there is no hollow cavity. That is also a characteristic part of the important point about the fundus. Now coming to the next, that is the body. अब body के बारे में बात करें, देखो the body has a few presenting parts. अब ये तो एक coronal section है. When you see a uterus live in front of you, then we will be seeing it has an anterior surface, or you can say antero-inferior, क्योंकि वो anti-flexed, anti-verted होगा, तो it will be bending downwards. Okay, so anti-inferiorly एक surface होगा, posterior-superiorly एक surface होगा, and it will have 2 lateral borders. Okay, so lateral borders will be along this part. ये वाला part में और ये वाला part में you'll be having the lateral borders. It is a coronal section, so you can't see the anterior and the posterior surfaces. So these are the 4 presenting parts of the body of the uterus. Now talking about the peritoneal reflections that you'll be getting on the uterine body and the fundus. पिछला वाला photo.
सेकंड, देखो नॉट ये वाला नहीं, ऊपर ये वाला, इसको थोड़ा बड़ा कर, ये वाला नीचे वाला देखना है, हाँ हाँ नीचे वाला देखना है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर, देखो यहाँ पे पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस दिया हुआ है। ओके, बॉडी ऑफ द फंडस, बॉडी ऑफ द यूट्रस में कैसे पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन होता है। ये वाला जो सरफेस है, दिस सरफेस दैट यू कैन सी, क्या हुआ, ओ आप भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं इसलिए मिट जा रहा है। ओके, दिस वन इज द एंटीरियर सरफेस, देखो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, उसके अपर सरफेस पे जो लाई करेगा दैट विल बी द एंटीरियर इंफीरियर सरफेस, दिस वन। एंड एक और सरफेस देखो पीछे की तरफ है, दिस वन, दिस इज द पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस, और लैटरल तुम लोग को दिखा चुके हैं। अब पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो वी हैव ऑलरेडी सीन द पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टम, कि जो मिडिल 1/3 पार्ट आता है दैट बेंड्स लाइक दिस वजाइना के कुछ पोर्शन के ऊपर एंड देन कंटिन्यूज पूरा on the posterior surface of the uterus, it continues and then continues anterior surface of the uterus up to the isthmus. Okay, so when you reach up to the isthmus, uske baad kya hota hai, it bends forwards and moves on the upper surface of the urinary bladder. So when we talk about the peritoneal reflections, in relation to the anterior surface, it will be up to the isthmus, very very important, peritoneal reflection up to the isthmus, up to the isthmus. And when we talk about the peritoneal reflection on the posterior surface, देखो it is going up to the posterior vaginal wall का upper part. Okay, this is very 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 important. So that is the peritoneal reflection of the two sides, anterior and posterior surfaces. अब two sides के बारे बोले lateral sides में, तो there is the lateral two borders are the non-peritoneal areas of the uterus. So uterus has two non-peritoneal areas, they are on the two lateral borders where the broad ligament attaches. Okay, so that is about the peritoneal reflection of the body. Now coming to certain structures that are attached to the angle, जिस position पे uterine body पे fallopian tube घुसता है, that is known as the lateral angle of the uterus. So what are the other structures that you will be getting attached to the lateral angle of the uterus? So there are three structures that are attached to the lateral angles of uterus. Previous वाला picture दिखाइए ना, बड़ा वाला जो था, आई थिंक थर्ड ही था वो, हाँ दिस वन, देखो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे देखो दिस इज द लैटरल एंगल, द पोजीशन वेयर द यूट्राइन ट्यूब इज एंटरिंग इनटू द यूट्राइन बॉडी। तो यहाँ पे थ्री स्ट्रक्चर्स अटैच्ड, वन इज द फैलोपियन ट्यूब इटसेल्फ, दूसरा यू कैन सी इज द राउंड लिगामेंट, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है राउंड लिगामेंट, एंड द थर्ड वन you have the ligament of the ovary. These are the three structures that you get in the lateral angle of the uterus. Okay, these are characteristics, ये पूछा जाता है. So these are about the uterine body. Now talking about the cervix. अब यहीं पे देख लो, इस डायग्राम में ही देख लो, देखो this portion is known as the cervix, extending from the internal os to the external os. Now इसमें देखो, इसके बाहर में there is a fold like this. This is the vagina. अब ट्राई टू इमेजिन कि विंटर का टाइम है, यू आर वेयरिंग अ स्वेटर ऑन टॉप ऑफ अ फुल स्लीव शर्ट. ओके, तो फुल स्लीव शर्ट के ऊपर अगर स्वेटर पहनोगे तो देखोगे नियर योर रिस्ट देयर इज अ हॉलो स्पेस दोनों लेयर्स के बीच में. सिमिलरली अगर वजाइना के अंदर सर्विक्स फिट रहता है तो इट इज लाइक दिस ओनली. यहाँ पे यू विल बी गेटिंग अ हॉलो स्पेस, एंड दीज हॉलो स्पेसेस आर नथिंग बट द fornix. So basically the gap between the cervix outer part and the inner part of the vagina upper part, that is known as the fornix. So there are four fornix. vagina पढ़ोगे तो you'll be reading there are four, anterior, posterior and दो lateral, मतलब चारों तरफ से जो space होता है that is the fornix. तो अब इस डायग्राम में देखो, you can see आधे half of the portion से you have the attachment of the vagina. अब ऊपर का जो ये portion है, this portion which I have just drawn, that is the supravaginal part. So cervix is divided into two parts. The supravaginal part that is above the vagina and the vaginal part. This one becomes the vaginal part. Okay. This portion कहाँ?
this portion becomes the vaginal part, and ऊपर वाला portion that becomes the supravaginal part. So these are the two parts of the cervix. Now previous diagram में तुम लोग देखे ही होंगे कि anteriorly जो relation था उसमें जितना supravaginal part था, anterior surface of the cervix जो था उसमें supravaginal part was entirely non-peritoneal and posterior surface was fully peritoneal. तो ये important difference है between the supravaginal part of the anterior surface and the posterior surface. पूछा जाता है ये वाइवा में. Okay, so this is about the cervix. अब fornix का क्या importance है? You know that एक pouch of Douglas last class में we have discussed, एक pouch of Douglas that is formed between the rectum and the posterior wall of the uterus. That can be approached to the posterior fornix. मतलब posterior fornix, मान लो if this is the posterior fornix, इसके through if we encroach inside, we'll be reaching up to the pouch of Douglas, and if there is a collection of pus or anything in the pouch of Douglas, so that can be easily evacuated from there. It won't be needed to open the abdomen. Okay, so that's the importance of the fornix. Now coming to the next part, that is the ligaments that are attached to the cervix. The ligaments that are attached to the cervix are, the first one is the McEnroe's ligament. Okay, McEnroe's ligament. Then we have the second one. I'll be dealing with each one later on. Abhi naam bas sun lo. First one is McEnroe's ligament. Second one is pubocervical ligament, and the third one is uterosacral ligament. Okay, so these three ligaments are present in relation to the cervix. Now talking about the arterial supply. देखो यहाँ पे एक हल्का सा नजर आ रहा है uterine artery. Okay, uterine artery. देखो यहाँ पे there is an artery, उसके यहाँ से just tortuously moving around, going up to the near the angle, lateral angle of the uterus. और ऊपर से एक और आ रहा है, that is the ovarian vessel. देखो ovarian vessel, ऊपर से ये जो vessel आ रहा है, that is the ovarian vessel. नीचे से जा रहा है uterine artery. They anastomose near the angle. Okay, so they are mainly responsible for supplying the ovary and the uterus along with the cervix. Okay, so that is the arterial supply. Next page.